is one other participant during the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. Participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीना कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग ओमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा का ज्ञायक स्वभाव का स्वरूप दिखाना चाहते हैं। ज्ञायक स्वभाव जीव के सब परिणाम में छुपा हुआ है। ज्ञायक स्वभाव प्रति समय जीव के विकारी परिणाम हो, शुद्धाशुद्ध परिणाम हो के शुद्ध परिणाम हो, चाहे जीव बहिरात्मा रूप परिणमन करे या अंतरात्मा रूप परिणमन करे। All participants are muted and they can unmute themselves. कि आत्मा परमात्मा रूप परिणमन करे तो उसके परिणमन में छुपा हुआ ज्ञायक स्वभाव है। ज्ञायक स्वभाव को मुख्य करने के लिए तुझे ये परिणामों को गौण करके, परिणामों की महिमा छोड़ के, परिणामों में हूँपना छोड़ के ज्ञायक स्वभाव को मुख्य करके ज्ञायक पर दृष्टि और उपयोग रखने से तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता होगी। तो आचार्य भगवान यहाँ तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार में गाथा 145 चलती है। 145 गाथा में
अज्ञानी का मान्यता ऐसा है कि शुभ और अशुभ कर्म दोनों के बीच में अंतर है, ऐसी अज्ञानी की मान्यता है। ज्ञानी ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं कि शुभ अशुभ कर्म दोनों के बीच में अंतर नहीं है। अज्ञानी ऐसा कहता है कि शुभ अशुभ कर्म का बंध जो होता है उसका हेतु, उसका कारण भिन्न भिन्न है। शुभ कर्म का कारण शुभ परिणाम और अशुभ कर्म का कारण अशुभ परिणाम। इसलिए शुभ अशुभ कारण, शुभ अशुभ परिणाम यानी कारणों भिन्न भिन्न होने के कारण शुभ अशुभ कर्म में अंतर है। तो अज्ञानी ने एक हेतु से बात बताई, दूसरी बात ऐसी बताई कि दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। तीसरी बात बताई तीनों का अनुभवन भिन्न भिन्न है। और चौथी बात बताई दोनों भिन्न भिन्न आश्रय से उत्पन्न होते हैं। तो अज्ञानी ऐसी न्याययुक्त बात बताकर शुभ भाव और अशुभ भाव में अंतर है ऐसा सिद्ध करना चाहता है। लेकिन आगे आचार्य भगवान कहेंगे कि दोनों के हेतु में भिन्नता नहीं है, दोनों के स्वभाव में भिन्नता नहीं है, दोनों का अनुभवन में भिन्नता नहीं है और दोनों के आश्रय में भिन्नता नहीं है। तो जो अज्ञानी की न्याय युक्ति है उसमें कल एक विषय चला था, वो विषय था शुभ अशुभ कर्म का हेतु भिन्न भिन्न है। तो देखो गाथा 145 उसका भावार्थ पेज नंबर 238 ऊपर की 5 लाइन चली है। 5 लाइन में आखिरी शब्द है इस प्रकार हेतु के भेद। हेतु का अर्थ है कारण, कारण का अर्थ है शुभ कर्म शुभ परिणाम के कारण होता है और अशुभ कर्म अशुभ कारण के कारण होता है। इसलिए दोनों के बीच में भेद है। यहाँ तक हम आए हैं। अब आगे साता वेदनीय
उसका थोड़ा विस्तार हमने किया था कि अघाती कर्म में एक सातावेदनीय कर्म है। उसका 2 प्रकार है। वेदनीय कर्म का 2 प्रकार है, सातावेदनीय, असातावेदनीय। अनुकूल संयोग वो सातावेदनीय है, प्रतिकूल संयोग असातावेदनीय है। तो शुभ परिणाम हो तो उसका निमित्त से सातावेदनीय कर्म का बंध होता है, और बाह्य में अनुकूलता भी मिलती है। जैसे कि चक्रवर्ती राजा हो तो उसको बाहर की जो संपत्ति आदि है वो सातावेदनीय कर्म के उदय के कारण चक्रवर्ती राजा को सब परिग्रह अनुकूल मिलते हैं। दूसरा है शुभायु। कल बताया था कि शुभ परिणाम के कारण जीव मनुष्य या देव गति में जाता है, वो शुभ आयु है। उसके बाद शुभ नाम, नाम कर्म की 93 प्रकृति है। उसमें कुछ प्रकृति शुभ है, कुछ प्रकृति अशुभ है। नाम कर्म में गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, आंगोपांग नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म, बंधन नाम कर्म, संघात नाम कर्म, संस्थान नाम कर्म, सहनन नाम कर्म, ऐसे विविध प्रकार के नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ। नाम कर्म का कार्य क्या, तो कि शरीर की रचना करना। जैसे कुंभार घड़ा की रचना करता है, वैसे नाम कर्म शरीर की रचना करता है। उसमें जो नाम कर्म शुभ है, जैसे कि यश कीर्ति शुभ नाम कर्म, घर में समाज में कीर्ति मिले, शुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म से अवयव शरीर के सुंदर मिले। जीव को त्रस पर्याय मिले, पंचेंद्रिय संगनी होवे। सुभग नाम कर्म, जिससे जीव को प्रभावशाली व्यक्तित्व मिले। तो 93 प्रकृतियों में शुभ नाम कर्म की बहुत से प्रकृति है। जैसे तीर्थंकर भगवान हो, उसके शरीर का आकार समचतुरस संस्थान हो, वो शुभ नाम कर्म के कारण है। तीर्थंकर भगवान को वज्र ऋषभ नारद सहनन
मिलता है वो शुभ नाम कर्म। उसके बाद बताया शुभ गोत्र। गोत्र कर्म दो प्रकार का है, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। उच्च गोत्र में जन्म होता है वो शुभ, तो शुभ गोत्र होता है। तो यहाँ बताया कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म ऐसा दो भेद कर्म में है। अब आगे शुभ कर्म कैसे होते हैं पहले उसका दृष्टांत दिया। अब अशुभ कर्म, वो कर्मों के परिणाम में चार घाती कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोनियंत्र, चार घाती कर्म। ये चार घाती कर्म है, अशुभ परिणाम का फल है। असाता वेदनीय कर्म, बाहर के संयोग प्रतिकूल मिलते हैं, वो अशुभ परिणाम के फल में असाता वेदनीय कर्म का फल है। अशुभ आयु, नीची गति में जन्म हो, तिर्यक नरक में, निगोद में, एक इंद्री, बे इंद्री, त्रण इंद्री, चार इंद्री, वो सब अशुभ परिणाम के कारण जो अशुभ कर्म का बंध हुआ था और अशुभ आयु बंध हुआ था, तो उसके फल में नीच गति प्राप्त होती है। अब अशुभ नाम, जो नाम कर्म की 93 प्रकृति है, उसमें पहले शुभ बताई, अब अशुभ बताते हैं। एक इंद्रिय में जन्म होना, साधारण शरीर मिलना, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, त्रण इंद्रिय में जन्म होना, और जो संस्थान, वामन संस्थान मिलना, यानी शरीर की हाइट कम मिलना, संस्थान में देखो, उसके बाद सहनन, असंप्राय श्रुपाटिका सहनन, ये सब अशुभ कर्म का उदय है। दूसरा, स्थावर में जन्म होना, वह शुभ नाम कर्म है। शरीर सूक्ष्म मिलना, वह शुभ नाम कर्म है। अपयश मरना, वह शुभ नाम कर्म का फल है। शरीर के अवयव अच्छे नहीं मिलना, वो भी अशुभ नाम कर्म है। शरीर का स्वर अच्छा नहीं मिलना, वो भी अशुभ नाम कर्म है। तो अशुभ नाम कर्म, अब अशुभ गोत्र, अशुभ परिणाम के फल में जो कर्म बांधा था, उसके फल में नीच गोत्र में जन्म होना। ये कर्मों के परिणाम यानी प्रकृति वगैरह में भेद है। इस प्रकार स्वभाव का भेद होने से कर्म का शुभ और अशुभ ऐसा भेद है। अज्ञानी क्या कहता है कि अज्ञानी कहता है शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम के फल में कर्म के स्वभाव, कर्म की प्रकृतियाँ वो भिन्न भिन्न मिलती है।
एक शुभ कर्म, दूसरा अशुभ कर्म, और तो दोनों कर्म के स्वभाव भिन्न भिन्न है। एक स्वभाव से शुभ है, दूसरा अशुभ है, इसलिए कर्म में भेद होते हैं। तो पहले बताया कर्म का हेतु कारण भिन्न भिन्न, अब बताया स्वभाव भिन्न भिन्न। फिर से गुजराती में, कल जो चला था चौथी लाइन में आखिरी शब्द, आम हेतुनो भेद होवाथी, हेतु शब्दनो अर्थ छे कारण, कारणनो भेद होवाथी, कारणनो भेद એટલે શું? તો કે કર્મ બે પ્રકારના છે, અજ્ઞાની એમ કહે છે। એક શુભ કર્મ છે, એક અશુભ કર્મ છે। શુભ કર્મ બંધાણું એનું કારણ શુભ પરિણામ, અને અશુભ કર્મ બંધાણું એનું કારણ અશુભ પરિણામ। તો શુભ અશુભ કર્મ બંને એક નથી, પણ બેને બંધાવાના કારણ જુદા જુદા છે। આવું અજ્ઞાની કહે છે। માટે કર્મમાં બે ભેદ પડે છે, શુભ કર્મ, અશુભ કર્મ। હવે એ વાત ગઈકાલે ત્યાં સુધી ચાલી ગઈ છે। હવે શિષ્ય એવું સિદ્ધ કરે છે કે બંને કર્મના હેતુ તો જુદા છે, પણ સ્વભાવ પણ જુદા છે। શુભ કર્મનો સ્વભાવ જુદો, અશુભ કર્મનો સ્વભાવ જુદો। માટે અજ્ઞાની કહે છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહે છે કે સાતા વેદનીય શુભ આયુ, શુભ નામ કર્મ, શુભ ગોત્ર, એ કર્મોના પરિણામ, એ કર્મોની પ્રકૃતિઓ પહેલા શુભ પરિણામને કારણે શુભ કર્મ બંધાય છે, એમાં ભેદ પાડ્યો। શુભ અશુભના ભેદ માત્ર અઘાતી કર્મમાં પડે છે। ઘાતી કર્મ તો બધા પાપ પ્રકૃતિ છે, અશુભ પ્રકૃતિ છે, ત્યાં શુભ અશુભ એવો ભેદ નથી પડતો। જેમાં ભેદ પડે છે એમાં બતાવ્યું, કર્મના મૂળ સ્વભાવ બે, ઘાતી અને અઘાતી। ઘાતી કર્મના ચાર પ્રકાર, જ્ઞાનાવળી, દશાવળી, મોહની, અંતરાય। એ ચારે કર્મો અશુભ છે, ઘાતી કર્મ, અને એના પેટાભેદ 47 ભેદ અશુભ છે। હવે અઘાતી કર્મ, અઘાતી કર્મની જે પ્રકૃતિ છે 101, અઘાતી કર્મની 93 પ્રકૃતિ છે, 93 પ્રકૃતિ છે। આયુ કર્મની, વેદનીય કર્મની 2, આયુ કર્મની 4, નામ કર્મની 93,
ગોત્ર કર્મની 2. એમ અઘાતીના 101 પ્રકાર છે. એ 101 પ્રકારમાં 2 ભેદ પડે છે. અમુક કર્મો શુભ કર્મ છે, અમુક કર્મો અશુભ કર્મો છે. તો પેલા અઘાતી કર્મમાં ભેદ પાડ્યા કે સાતાવેદનીય એ શુભ કર્મ છે. શુભ આયુ તો મનુષ્ય આયુ, દેવ આયુ એ શુભ આયુ છે. શુભ નામ તો કે નામ કર્મની પ્રકૃતિમાં કેટલીક પ્રકૃતિ શુભ છે, કેટલીક પ્રકૃતિ અશુભ છે. અને ગોત્ર 2 પ્રકારના છે, ઉચ્ચ અને નીચ. ઉચ્ચ ગોત્ર છે એ શુભ ગોત્ર છે, નીચ ગોત્ર છે અશુભ ગોત્ર છે. હવે એમ કહે છે કે આ શુભ કર્મો છે એ ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવના છે ને અશુભ કર્મોના સ્વભાવ. તો કે શુભ કર્મમાં સાતાવેદનીય કર્મ કોને કહેવું? તો કે બાહ્ય સંયોગો છે એ અનુકૂળ મળવા એ સાતાવેદનીય કર્મનો ઉદય કહેવાય અને શુભ કહેવાય. શુભ આયુ કોને કહેવું? તો કે મનુષ્ય તિર્યજનું આયુ શુભ આયુ કહેવાય. શુભ નામ કર્મ કોને કહેવાય? તો કે નામ કર્મની 93 પ્રકૃતિમાં જે પ્રકૃતિ શુભ છે એને શુભ નામ કર્મ કહેવાય. ગતિ નામ કર્મ છે તો દેવ ગતિ, મનુષ્ય ગતિ તને મળે એ શુભ નામ કર્મનું ફળ છે. જે ગતિમાં ગયો ત્યાં પંચેન્દ્રિય પણ મળે એ શુભ નામ કર્મનું ફળ છે. ત્યાં તને શરીર મળ્યા ઔદારિક, આહારક, તેજસ અને કાર્મણ. તો કે મનુષ્યમાં ઔદારિક, આહારક, તેજસ, કાર્મણ તો શુભ નામ કર્મનું ફળ છે. પણ વૈકૃતિકમાં નરકમાં જન્મો તો અશુભ નામ કર્મ છે. એવી જ રીતે સંસ્થાન સહનન, પેલું સંસ્થાન છે સમચતુર સંસ્થાન, એ શુભ નામ કર્મ છે. 5 સંસ્થાન બીજા છે એ અશુભ નામ કર્મ છે. એમ સહનન, વજ્ર, ઋષભ, નારદ સહનન છે એ શુભ નામ કર્મનું ફળ છે. બાકીના 5 છે અશુભ નામ કર્મનું ફળ છે. એમ જે કર્મો શુભ નામ કર્મનું ફળ અને અશુભ નામ કર્મનું ફળ. એટલે શિષ્ય એમ કહે છે
કે શુભ અશુભ કર્મો એના સ્વભાવ જુદા જુદા છે, માટે કર્મના પ્રકાર શુભ અશુભ એવા બે હોવા જોઈએ. જો આગળ શું કીધું? આમ સ્વભાવનો ભેદ હોવાથી કર્મના શુભ અને અશુભ એવા બે ભેદ છે. આચાર્ય ભગવાન બીજા પેરેગ્રાફમાં એમ સિદ્ધ કરશે કે બંનેના સ્વભાવ સરખા છે, માટે ભેદ પડતો નથી. હવે બંનેના સ્વભાવ સરખા છે એના કારણો આચાર્ય ભગવાન બતાવશે. તો એક વાત થઈ, અજ્ઞાની કે છે હેતુનો ભેદ છે, સ્વભાવનો ભેદ છે. હવે અનુભવનો ભેદ બતાવે છે. કોઈ કર્મના ફળનો અનુભવ સુખરૂપ છે ને કોઈ કર્મના ફળનો અનુભવ દુઃખરૂપ છે. શું કીધું? શુભ કર્મ છે એનું ફળ જીવને સુખરૂપ લાગે, અશુભ કર્મનું ફળ દુઃખરૂપ લાગે. શુભ કર્મનો ઉદય હોય, લાખો કરોડો રૂપિયા આવે તો સુખરૂપ લાગે, અને અશુભ નામ કર્મનો ઉદય હોય ને લાખો કરોડો રૂપિયા સંયોગમાંથી ચાલ્યા જાય તો દુઃખરૂપ લાગે. શુભ કર્મનો ઉદય હોય તો શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સારું હોય, નિરોગી શરીર હોય, અને અશુભ કર્મના ઉદય હોય તો શરીરમાં અનેક પ્રકારના રોગ હોય. તો કે છે કોઈ કર્મના ફળ સુખરૂપ, કોઈ કર્મના ફળ દુઃખરૂપ. કોઈ કર્મના ઉદયમાં ક્રોધાદી તીવ્ર કસાય થાય એ દુઃખરૂપ લાગે, પણ કોઈ કર્મના ઉદયમાં રાગાદી ભાવ થાય, રતિ થાય, હાસ્ય થાય તો કે પરિણામ એને સુખરૂપ લાગે. તો કે ઉત્પન્ન તો ખરેખર વિભાવ થયો છે, પણ અજ્ઞાની એ વિભાવને વિભાવપણે નહીં માનતા રાગાદી પરિણામ શુભ પરિણામ એને સાતાયુક્ત લાગતા સુખરૂપ માને છે. શું કહ્યું? કે કોઈ કર્મનો ફળ નો અનુભવ સુખરૂપ છે. 5-25 લાખ કમાણો હોય તો સુખરૂપ લાગે, 5-25 લાખ જાય તો દુઃખરૂપ લાગે. ભાવતી ચીજ સંયોગમાં મળે તો સુખરૂપ લાગે, અને ક્યાંક ગયો હોય અને વસ્તુ એવી આવે ને સંયોગ પણ એવા હોય કે કાંઈ લેવું પડે પણ ચીજ ભાવતી ન હોય તો દુઃખરૂપ લાગે.
તો અજ્ઞાની એમ કહે છે કે સુખરૂપ અનુભવ અને દુઃખરૂપ અનુભવ, શુભ કર્મનો ફળ સુખરૂપ અનુભવ, અશુભ કર્મનું ફળ દુઃખરૂપ અનુભવ. તો કે બંને કર્મના અનુભવ જુદા જુદા છે, માટે બંને કર્મમાં તફાવત છે, અંતર છે. માટે કર્મના શુભ અશુભ એવા બે ભેદ છે. માટે શુભ અશુભ કર્મ જુદા છે એવું अज्ञानी मिथ्या दृष्टि किए છે. परिवार हिंदी में, फिर से हिंदी में. कोई कर्म का फल का अनुभव सुखरूप है, कोई कर्म के फल में चक्रवर्ती राजा हुआ और बाह्य के संयोग अनुकूल मिला तो सुखरूप लगा. शरीर निरोगी मिला तो सुखरूप लगा. लंबा आयुष मिला तो सुखरूप लगा. पत्नी बच्चे घर बार सब अनुकूल मिला तो उसको लगता है तो हम तो बहुत सुखी है. अन्यमति बोलते हैं कि भगवान ने तो हमें सब दिया है. चार गति में परिभ्रमण करता हुआ जीव भी ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूं. गुजराती में कहावत है કે ઘરનું ઘર છે, ફરિયામાં નળ છે, છોકરાઓ લાઈનસર છે, અમે તો સુખી છીએ. क्या कहा? घर के घर है, घर की फड़ी में नल है और बेटे बेटी सब लाइनसर है, तो हम तो सुखी है. उसको ऐसा लगता नहीं है कि मैं दुखी हूँ. तो शुभ कर्म का फल और उसका अनुभव, अशुभ कर्म का फल और उसका अनुभव, तो के दोनों अनुभव में अंतर होने के कारण शुभ अशुभ कर्म के दो भेद यथार्थ है. अशुभ कर्म के फल में शरीर में रोग हो, 2 टाइम का खाना पीना मिलना मुश्किल लगे,
बाहर में कुटुंबी सभ्य के कोई सहकार न हो, सब प्रतिकूलता लगे। तो ये अशुभ कर्म का फल है। कुछ पूर्व पुण्य के कारण वर्तमान में मिला हो, वो भी चला जाए। एक दिन में क्या का क्या हो गया ऐसा लगता है अशुभ कर्म के फल में। तो कि शुभ कर्म का फल, अशुभ कर्म का फल, दोनों का अनुभव तो भिन्न भिन्न है। इसलिए शुभ अशुभ कर्म भिन्न भिन्न है, ऐसा अज्ञानी न्याय युक्ति से सिद्ध करना चाहता है। दूसरे पैराग्राफ में ज्ञानी उसका उत्तर देने वाले हैं। अब देखो चौथी बात बताता है। चौथी बात में ऐसा बताता है कि शुभ कर्म किसके आश्रय से होता है और अशुभ कर्म किसके आश्रय से होता है। दोनों का आश्रय भिन्न भिन्न है, इसलिए शुभ अशुभ कर्म भिन्न भिन्न है। ऐसा अब सिद्ध करेंगे। आगे देखो, किसी कर्म यानी शुभ कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित है। जो साधक है, मोक्ष मार्ग यानी साधक दशा, साधक दशा का अर्थ है 4 से 12 गुण स्थान। मोक्ष मार्ग का अर्थ है शुद्धता के साथ शुभ भाव। शुद्धता के साथ शुभ भाव, मोक्ष मार्ग। तो कोई कर्म, कोई का अर्थ है शुभ कर्म, शुभ कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित है। अर्थात मोक्ष मार्ग में शुभ परिणाम होते हैं और उसके फल में शुभ कर्म का बंध होता है। सम्यक दृष्टि हो, श्रावक हो, मुनि हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे, पूजा करे, उसकी स्तुति करे, सम्यक दृष्टि 5 पापों का त्याग करे,
सप्त व्यसन का त्याग करे सम्यक दृष्टि, लौकिक जीवन स्वच्छ हो, निंदनीय न हो, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक एक देश व्रत का पालन करे, पड़ीमा ले तो शुद्धता के साथ एक देश महाव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 11 प्रकार की पड़ीमा सविकल्प दशा में ये सब शुभ भाव है। और श्रावक मोक्ष मार्ग में है तो मोक्ष मार्ग का आश्रय लेकर शुभ परिणाम किया और उसके फल में शुभ कर्म का बंध हुआ। तो शुभ कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रय से उत्पन्न हुआ। मोक्ष मार्ग में शुभ कर्म का बंध हुआ। आगे बताया। और कोई कर्म, अब अशुभ कर्म की बात करते हैं। बंद मार्ग के आश्रय से हैं। तो क्या अशुभ कर्म जो जीव बहिरात्मा है, जो जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, संसारी है, मोही रागी देशी है, ऐसे जीव को अशुभ परिणाम की प्राप्ति और अशुभ परिणाम के फल में अशुभ कर्म का बंध होता है। वो बंद मार्ग में खड़ा है तो बंद मार्ग के आश्रय से अशुभ कर्म हुआ। इस प्रकार आश्रय का भेद, एक मोक्ष मार्ग के आश्रय पर शुभ कर्म होता है और बंद मार्ग के आश्रय पर अशुभ कर्म का बंध होता है। तो कि ऐसा आश्रय का भेद होने से कर्म का शुभ और अशुभ, ऐसा 2 भेद होता है। शुभ कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रय से उत्पन्न हुआ, अशुभ कर्म बंद मार्ग के आश्रय से उत्पन्न हुआ। तो शुभ कर्म का आश्रय और अशुभ कर्म का आश्रय भिन्न भिन्न है, ऐसा अज्ञानी कहता है। क्या कहा फिर से गुजराती में? હવે અજ્ઞાની પેલા 3 પ્રકારે ભેદ બતાવ્યો શુભ અશુભ કર્મનો, કે શુભ અશુભ કર્મનો હેતુ જુદો છે, સ્વભાવ જુદો છે, અનુભવ જુદો છે। હવે ચોથી વાત કરે છે કે શુભ કર્મ અશુભ કર્મ બંનેને આશ્રય જુદો જુદો છે। એના માટે કહે છે કે કોઈ કર્મ, કોઈ શબ્દનો અર્થ છે શુભ કર્મ। અહીંયા શુભ કર્મ મોક્ષ માર્ગને આશ્રય છે
મોક્ષ માર્ગ 4થા ગુણસ્થાનથી 12મા ગુણસ્થાનના અંત સુધી ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ સપ્ત વ્યસનથી રહિત હોય, સાથે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન હોય, સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર હોય, સવિકલ્પ દશામાં સપ્ત વ્યસન ન હોય, નિંદનીય જીવન ન હોય, તો સવિકલ્પ દશામાં એવા શુભ ભાવ હોય અને સાથે આંશિક શુદ્ધતા પણ છે, ત્યારે મોક્ષ માર્ગ કહેવાય. પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી શ્રાવક હોય, તો એને એક દેશ વ્રતનું પાલન હોય, દેશ વ્રતી. ત્રણ પ્રકારના ગુણવ્રત હોય, 4 પ્રકારના શિક્ષાવ્રત હોય, 11 પ્રકારની પડીમા હોય. તો પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી શ્રાવકે મિથ્યાત્વ, અનંતાનુબંધી કસાય, અપ્રત્યાખ્યાન કસાય, એ ત્રણેય પાપોનો નાશ કર્યો છે. અને સવિકલ્પ દશામાં આવે ત્યારે દેશવ્રત શુભભાવ રૂપે પાલન કરે, પડીમાઓનું પાલન કરે શુભભાવ રૂપે. મુનિ હોય, મિથ્યાત્વ સહિત 3 કસાઈ, મોટા પાપ નાશ થઈ ગયા. બહારના 5 પાપોનો નાશ કર્યો, હિંસા, ચોરી, જૂઠ, કુશીલ અને પરિગ્રહ. એવા મુનિરાજ સવિકલ્પ દશામાં આવે ત્યારે શુભભાવરૂપ 5 મહાવ્રત આદિ હોય, 5 સમિતિ હોય, 3 યુક્તિ હોય, 5 આચાર હોય, 6 આવશ્યક હોય, 10 લક્ષણ ધર્મ હોય, 12 પ્રકારના તપ હોય, 12 પ્રકારની ભાવના હોય, 22 પ્રકારના પરિસજય હોય, 28 પ્રકારના મૂળગુણ હોય, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, આલોચના હોય, પ્રાયશ્ચિત હોય, ભક્તિ સમાધિ હોય, સદુપયોગ હોય, સામાયિક હોય, પરિહાર વિશુદ્ધિ હોય, છેદોપસ્થાપનના ભાવ હોય. તો કે આવા અનેક પ્રકારના શુભ ભાવ મોક્ષ માર્ગમાં હોય, એ શુભ ભાવના ફળમાં શુભ કર્મ બંધાય. તો શુભ કર્મ તો મોક્ષ માર્ગને આશ્રય ઉત્પન્ન થાય છે. અને અશુભ કર્મ પછી કયું, કોઈ કર્મ બંધ માર્ગને આશ્રય. જે જીવ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસા યોગ રૂપે પરિણમે, એ પરિણામ બધા અશુભ છે, બંધ માર્ગ છે. પુણ્ય પાપ આશ્રમ બંધ રૂપે પરિણમે.
मोह राग द्वेष रूपे परिणमे, क्रोध मान माया लोभ रूपे परिणमे, नव नो कसाई रूपे परिणमे. એ તો બધો બંધ માર્ગ છે. અજ્ઞાની બહિરાત્મા બંધ માર્ગમાં તો અશુભ કર્મ બાંધે છે, તો અશુભ કર્મ બંધ માર્ગના આશ્રય ઉત્પન્ન થાય છે અને શુભ કર્મ મોક્ષ માર્ગના આશ્રય ઉત્પન્ન થાય છે. માટે મોક્ષ માર્ગ અને બંધ માર્ગના આશ્રય બેયનો આશ્રય જુદો જુદો. માટે શુભ કર્મ અને અશુભ કર્મ બંને જુદા જુદા છે, ભિન્ન ભિન્ન છે. આવું અજ્ઞાની કહે છે. માટે શુભ અશુભ કર્મના એવા બે ભેદ પાડવા જોઈએ. હવે અજ્ઞાનીની દલીલ કન્ક્લુડ કરે છે આ પ્રમાણે, એટલે કે ઉપર કયા પ્રમાણે હેતુ, સ્વભાવ, અનુભવ અને આશ્રય એ 4 પ્રકારે કર્મમાં ભેદ હોવાથી કોઈ કર્મ શુભ છે ને કોઈ અશુભ છે એમ કેટલાકનો પક્ષ છે. કેટલાકનો એટલે અજ્ઞાનીઓનો પક્ષ છે. કેટલાક એટલે કોણ? તો કે અજ્ઞાનીઓ. અજ્ઞાનીઓનો પક્ષ છે એટલે મત છે. પક્ષનો અર્થ છે મત છે, માન્યતા છે. तो अज्ञानी कहता है कि इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय वो 4 प्रकार से कर्म का भेद होने से कोई कर्म शुभ और कोई कर्म अशुभ ऐसा भेद होता है. ऐसा कुछ का पक्ष है. ऐसा पक्ष किसको है? तो कि अज्ञानी को. पक्ष का ऐसा मत कि शुभ अशुभ कर्म दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा मत अज्ञानी का है. ये बात सब अज्ञानी की ओर से न्याय युक्ति से पुटअप की, न्याय युक्ति से बताई. ऐसा क्यों बताया? तो कि अज्ञानी का ऐसा ऐसा अभिप्राय है. और ये अभिप्राय मिथ्या है, झूठ है, अज्ञानमय है. और ऐसे झूठ मत के कारण अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है और उसके फल में 4 गति में संसार में घूमता है. उसके सामने अब ज्ञानी क्या कहते हैं वो कल बताएंगे. वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान की जय हो. महाविद्य क्षेत्र में विराजते हुए प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनचतुष्टय के दाता, दिव्य ध्वनि के दातार, शासन उपकारी, सीमा में रहने वाले सिमंदर भगवान की जय हो. कड़ीकाड़ सर्वज्ञ केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हुए महासमर्थ आचार्य
आगम के रचयिता भगवत श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में सम्यक दर्शन का उपदेश देने वाले तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि, पूज्य गुरुदेव के नवभव की महिमा दिखाने वाली स्वानुभव युक्त जाति स्मरण ज्ञान युक्त प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त रूप सर्व जिनवाणी मात की जय हो। पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम की जय हो। सुवर्णपुरी धाम में विराजते हुए सर्व देव शास्त्र गुरु भगवंत की जय हो। वर्तमान गुरु और भविष्य के तीर्थंकर श्री सूर्यकृतिनाथ भगवान की जय हो। श्री सूर्यकृति भगवान के समावसरण के मुख्य गणधर देवेंद्र कृतिनाथ भगवान की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो। थैंक यू राजूभाई, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, थैंक यू राजूभाई। जय जिनेंद्र, थैंक यू जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।